Recording in progress. A very good morning, everyone. We'll wait for another 2 minutes for people to log in. Then we'll begin. We'll begin sharp at 6:32. A very good morning, everyone. I'm Sakshi Rora, organizer of PosiFest, back to you again on day 5 with Pinky Bajaj here. As a child, have you ever been shamed, abused, or raised in a toxic environment? If yes, those experiences may be affecting your life as an adult. We study the tender ages. From the tender ages of 0 to 7, we study our environments, forming a script that shape the rest of our lives. By age 7, we affirm that script. This was what Pinky Bajaj explained to me over an interesting call about her experiences as a therapist. She says, as we grow, these scripts become tangled knots that hold us back. It separates us from our loved ones and causes friction and misunderstanding. Pinky Bajaj, also as Untangle Your Thoughts, is a therapist who can help you heal and move forward with a better life. She has a master's in counseling psychology, a diploma in integrated counseling expertise in transactional analysis, and in rational emotive behavior therapy. Pinky herself suffered with anxiety for many years and had panic attacks that did not settle even with medical treatment. She has now conquered her anxiety and is eager to help others suffering from it too.
She also specializes in couples therapy. She is a sex educator as well as advocates psychosexual awareness and self pleasure. She knows the deep impact that sexual abuse has on future relationships and helps women heal from sexual trauma. She conducts mental health workshops, mental health drives, and also one on one counseling sessions. Whether you're a parent, an adult struggling with the past trauma, or a child finding your way through life's challenges, she welcomes you with open arms. So here we are welcoming Pinky Bajaj today. A very warm welcome to you, Pinky. Good morning, everyone. Thank you so much for this warm welcome. How is everyone? Good morning. You all can unmute yourself and you all can talk. It'll be an interactive session. Super fine. So, Super fine. so good to see morning, everybody, have those smiles. And please, jinki camera off and even they can on the camera. Yes. Okay, so talking about self-care, I think सबसे ज़्यादा इन टॉपिक एंड सबसे ज्यादा लोगों को पता भी है इस टॉपिक के बारे में व्हाट इज सेल्फ केयर सो आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू ऑल कि हम किस बारे में सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट नीडेड थिंग टुडे देखिए ऐसा है कि if I can make start the ball rolling is that we should have first of all start the thinking mindset process of a gratitude कि इतना अच्छा हमको भगवान ने जन्म दिया है इतना अच्छा sort of a we are fortunate and we are sort of a lucky और ऐसी स्थिति में in these circumstances it is very important that we should sort of take tender care of our sort of a mind and so that we are strong enough we should become strong enough कि ये नेगेटिव्स तो आते रहेंगे लाइफ में नेगेटिव्स तो आते रहेंगे वो तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ बट वन शुड बी सो स्ट्रॉन्ग इनफ कि खुद को हमको इमोशनल ट्रॉमा ना हो दैट इज सेल्फ केयर एक तरीके का वो भी एक सेल्फ केयर है बिसाइड्स केयर इन द फॉर्म ऑफ क्या खाना पीना एक्सरसाइज दैट इज वन एस्पेक्ट बट पॉजिटिविटी ऑफ माइंड is also a self care and uske liye there are we two types of emotions positive emotions and negative emotions if we stack up positive emotions and one of the big positive emotion is love oh so my then negativity कम हो जाती है negativity कम हो जाती है this is what I think I may be wrong but this is what I feel that is so interesting thank you so much anybody else would love to add koi bhi anybody Asha ji Ashok ji Good Manshi morning. good morning yes Asha ji Self-care, many things. Actually, doctor said so many things. Once again, 10 to in two lines. Be healthy and happy. okay correct okay yes, anybody else? Sanjay ji, Dr. Purvi, Ashok Good, ji. good morning, everyone. Good morning. Self-care can be written in various parameters. Self-care may include care for you in a different angle. It may be your physical health, your emotional health, and your mental health. Yeah. And third is your social circumstances to keep yourself away from negative and toxic mindset people. So that is also part of self-care. Absolutely, absolutely. आज सबसे ज्यादा हम किस चीज में इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि हमें उससे निकलना है? For example, it may be the more passionate or the more greed. That greed may be of
like better settlement or physical luxury, adding physical luxuries in life. It may be achieving new goals in the career or making events. Uh, let's say here I am from Gujarat, Diu. Okay. So I have basically I'm from Maharashtra. So the culture I have seen Maharashtra, for example, in Navratri in Gujarat and Jama Hmm. in Maharashtra. So the worship, the ultimate goal is the worship to goddess Durga. But Hmm. like attire and food and rituals are different. It's okay, but the ultimate goal is worship. But day by day, that goal is going somewhere else. That becoming an event now. Everything is turning to event, irrespective of any state or language. The things are changing into event. So get good at it, get photo clicks, make a reel, post to social media platform or share your colleague friend, and that's it. So, the society is lagging or uninterestedly or without intention, it is losing the spine of any event, even it is anyone's kid's birthday party or worshipping to your god. The spine is getting away from everything is turning into an event. Uh, we are attached to this kind of things very naturally. It's interestingly or uninterestingly, we are more focusing on event rather than the motive, objective, and purpose of the event. Uh, True. So that's true. yeah. Thank you so much for sharing. So, getting into the rat race of living that life, जब it is so overwhelming कि हमें लगता है self pamper करना है self care, oh go for that massage, oh go for that bath, oh have that cold shower, ये सब कर लो. But again, when I also came into this field, I first realized repairing the relationship with yourself is the biggest form of self care. Because मुझे नहीं पता मेरा relationship मेरे साथ क्या है. So getting like how Sakshi introduced as a child, हमारी 0 to 7 की एक script है. So this is how, we understand 20 times insight about our own selves. What are my patterns? इतने टाइम से मेरे attention seeking patterns क्या है? Because we all carry attention seeking. सिर्फ बच्चे को attention नहीं चाहिए, हमें भी चाहिए. To feel validated, to feel loved, even to stay in this world. To do our everyday things. Yes, somebody said? Yeah. No, Okay. nice. Okay, so just to understand that concept also, first we need to repair the relationship with ourselves, जो पूरी तरह से खराब हो चुका है. हम लोगों के हिसाब से चल रहे हैं या इसने कह दिया तुम इसमें अच्छे हो तो हम वो कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं. एंड देन इट इज लाइक ओ माय गॉड लाइफ बिगिंस एट 40. वी रियलाइज दिस सो लेटर इन द स्टेज कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया. So yes, today's biggest thing which is next coming up, loneliness is the biggest pandemic they say. इंसान अकेला है, इंसान alone है, क्यों? And the next biggest thing which is happening is like अभी हमें डिजिटल डिटॉक्स चाहिए. इतना हम गैजेट पे डिपेंडेंट हो चुके हैं कि द गैजेट इज टेकन ओवर. आप इमोशनली थोड़े से लो हो और आप रील्स देख रहे हो जो आपके माइंड में चल रहा है अगर ब्रेकअप के बारे में, तो वो वैसी वाली 100 रील्स आ जाएंगी. आप पेट लवर हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो तो पेट की रील्स आ जाएंगी. सो व्हाट यू थिंक, इट्स जस्ट गोइंग, इट्स जस्ट शोइंग. इमेजिन वो आईफोन ने या वो गैजेट ने या स्मार्टफोन ने इतनी अच्छे से आपकी थॉट्स पढ़ लिए हैं. एक चीज आप गूगल करो, नेक्स्ट टाइम वही चीजें आपको आती रहेंगी, विल बी पॉपिंग अप ऑन योर फीड. द यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स और व्हाट हैपेंस, बट हमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स में रखने के लिए कितना टाइम लगता है. एंड वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस हैपनिंग. करेक्ट? It is also been said like smoking 15 cigarettes is next to that loneliness. इतना बड़ा वो पैंडेमिक है कि कल को इंसान धीरे 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 अकेला और अलूफ होता जा रहा है. एंड इन दैट लेट्स टॉक अबाउट हमारा जो AQ है, EQ है, IQ है और SQ है.
what do you think amongst all is the most important? AQ is adversity quotient, EQ is emotional quotient, IQ is intelligent quotient, and SQ is social quotient. Please answer me which you think the quotient is very important. Yes, Dr. Umesh ji, Asha ji, or anybody, Kalavani ji. Yes, ma'am. EQ and SQ, Dr. Umesh says. Okay. Yes, Dr. Kalavani, I think she was to say, but unmute nahi ho raha unse. Sakshi, if you can. I can't unmute. I can only request for unmuting. Asha. Just trying. Yes, Asha, you want to say something? Yes. Actually, one thing, मोबाइल की वजह से जो एडिक्ट है, उसकी वजह से हम लोग के जो पर्सनल रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, मतलब जो इमोशनल रिलेशंस है, मतलब फैमिली को साथ में मीन्स गेट टुगेदर करना, इसके लिए अभी बैठेंगे सब लोग साथ में तो सब लोग अपना अपना हॉल में मोबाइल लेके बैठेंगे, वो भी गलत है। मीन्स एज अ पॉइंट, जैसे मैम बोल रहे हैं कि सबसे हम लोग दूर होते होते अलोन होते जा रहे हैं, तो काफ़ी पॉइंट्स हैं अभी। मुझे एक यही रिलेटेड लगी कि फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, तो इसके लिए और इमोशनल थिंग्स भी कम होएगी। सबको देख के सबका जो एक्टिविटीज़ है, मीन्स सबके मुँह से सब अलग-अलग टॉपिक्स निकलेंगे, तो विल बी सोशली अवेयर ऑफ मैनी थिंग्स। True, very true. But sometimes we say कि चलो हम दे रहे हैं टाइम, but सामने वाला नहीं दे रहा. We are नहीं trying दे रहा। hard. We are या trying very hard to fit in those shoes, या but सामने हुँ, वाला. So in that case, we can only fix ourselves. We cannot fix anybody else. हुँ, Now AQ is important, which gets conquered. Okay. Spirituality helps in controlling negative one. Now AQ is important, which gets conquered by EQ. Okay, lovely, lovely. तो बहुत बड़ी रिसर्च की गई. Even we were, I am a school counselor also, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो EQ is very important because emotional quotient एकदम थोड़ा स्टेबल होगा तो हम बाकी सब चीजों को हैंडल कर सकते हैं. बट द करंट रिसर्च विच सेज कि हमारा सबसे ज्यादा क्या हाई होना चाहिए, इसलिए बच्चों को वो वैल्यूज भी इनकलकेट करनी चाहिए, इज आ SQ, अ सोशल क्वोशंट. मीटिंग डिफरेंट पीपल, गोइंग एंड टॉकिंग आर थिंग्स आउट, जो हमें लगता है कि बचपन से सिखाया गया है, वो घर की बात बाहर नहीं होनी चाहिए. डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. So we are not used to going and actually talking to a stranger and approaching a stranger and even talking a vulnerability. आज जबकि सब strangers ही हैं, nobody knows me or no, I don't know anybody personally, but yes. And हमें ऐसा लगता है कि oh God, मेरी बात बाहर आ गई तो ये कैसा फील होगा. बट गोइंग टू सी, अगर आप स्ट्रेंजर के आगे सबसे बड़ी डिफिकल्टी भी बोल दो ना, वो सॉल्व करने वाला है, बट आपने अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर की and you felt, oh, nothing happened. It was not a big deal. जबकि वो बिग डील हमारे माइंड में हम बना के ब्लो अप कर देते हैं. Am I correct? Is everybody with me? Is everybody understanding मैं क्या बोल रही हूँ? So हमारा SQ इतना important है that we meet different people, we get different perspectives of life, we actually have an openness to even welcome the thoughts of other people, because हम कभी कभार rigid हो जाते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा ही चलना है, समाज में ऐसा ही चलता है, हम मिस्टर आइनो बन जाते हैं कि मैंने दुनिया देखी है, मैंने ये सब किया, स्पेशली द एक्सपीरियंस्ड पीपल, द सीनियर पीपल, एंड बाय द एज ऑफ 40 इवन वी फील, ओ गॉड, मुझे बहुत कुछ पता है, इन लोगों को नहीं पता है. सो वी आर वेरी रिजिड and we don't know what are we doing. So SQ and meeting people is also a form of very good self-care. Because अगर मेरी openness in mind और perspective ही नहीं आई, तो मुझे कैसे पता चलेगा what am I doing? And we are literally a peanut size in this entire universe. But हमें लगता है कि no, I know it much better. Because हम constrained at talking to the few family members, how you said, to only few limited people. Maybe I'm in my work ethic life. Maybe only those people and only those people, family members and that work people.
बाकी दुनिया को तो हम जानते ही नहीं है. Also, traveling to different countries, traveling to different cities, having those experiences also teaches quite a lot, quite a lot. And again, अभी हमें ये डिजिटल डिटॉक्स या द नेक्स्ट पैंडेमिक जो हम कह रहे हैं, लोनलीनेस, इन सब चीजों से कैसे बाहर आना है. ओके, टेल मी एनीबडी आउट हियर, on a scale of 0 to 10, हम कितने लोनली है? Everybody can put up their numbers in the chat box or say it. How much do I feel lonely? Everybody is going through this, I'm so sure. थोड़ा बहुत. Please put up in the chat box. On a scale of 0 to 10, हम कितने lonely है? Okay, 6. -2, Dr. Umesh. Okay, okay. Okay, it's 2 इनफैक्ट now. आज फिर अलाइनमेंट है आपके थॉट्स के साथ में, दैट यस वी हैव टू सोशलाइज, वी हैव टू टॉक, वी हैव टू ट्रेवल, ठीक है ना, एंड स्पीक इट आउट. अदरवाइज वो दिमाग का बोझ जो है वो कभी बाहर निकलेगा नहीं. सो परफेक्ट टोटल अलाइनमेंट विद यू मैडम. Yes. Okay. Everybody, Umesh, कितने आप loneliness would you say? Okay. I gave myself just a score of 2, Two. but will like to make it sort of a uh, 0 in fact. पता नहीं कैसी स्केलिंग है, बट मतलब जो है कि आई बिलीव दैट सोशलाइजेशन शुड बी देयर. आई मीट माय फैमिली मेंबर्स, आई गो टू their homes, talk to them, right, travel, and sort of try to uh, जो लोनलीनेस का टाइम है, I give that time for reflections. Okay, let me reflect and improve upon myself. That is what is my life. Loneliness is something different. Solitude is something different. We get a lot of answers in that self-introspection, self-realization, and we work on it. But loneliness is something which is biting from inside. कि यार, Yes, yes. which is not pleasable. Again, coming back के सिर्फ फैमिली मेंबर से बात करते हैं या हम अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, हम उसके बावजूद स्टेप आउट नहीं कर पाते हैं. सो वी आर कंस्ट्रेन्ड एंड वी फील जज्ड एंड वी स्टिल कैरी लेयर्स, और हम वो बात दिल की कर ही नहीं पाते. यू नो, वी फील जज्ड, ये अभी क्या बोलेंगे, एंड ये तो हमेशा ही ऐसा बोलते हैं. यू नो, वो अंकल की एक इमेज भी बन जाती है, ये अंकल आए अभी ये ज्ञान देने वाले हैं. सो पीपल आर नहीं तो नॉट रेडी टू लिसन. अभी तो एक अच्छी बात हो रही है ना कि हमको नए सोशलाइजेशन हो रहा है विद साक्षी, यस. विद पिंकी, है ना. तो ये जो है कि हमारे नए कनेक्शंस बन रहे हैं. सो वी आर शेयरिंग वाइब्रेशंस, वी आर शेयरिंग वाइब्रेशंस. Yes. तो Sakshi, you can form a support group. अब मैं पिंकी जो है मतलब आई एडमायर यू, मतलब पिंकी इज नेम एंड पिंकी इज Pinky is योर that. ड्रेस ऑल्सो. Thank you so much. I loved Dr. Umesh, आपने बोला speak it out. Are we literally speaking it out? That's what I said. घर लोगों के साथ हमें लगता है ये सोशल कोशेंट है, हम ये मेंटेन कर रहे हैं. हम कितना बाहर वालों के साथ, can we speak out our thoughts? Can we express ourselves? Are we carrying layers of judgment? Are we masking our emotions? Because again, 80 to 90% इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ जी रहा है, या वो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम करता है, बी इट इट्स अ मदर. सो हम क्या करते हैं कि हम अपना दुख किसी को दिखाना नहीं चाहते, अपनी वल्नरेबिलिटी किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं. सो घर में अगर लाइक हम अभी अपसेट होके भी निकले, कोई बाहर पूछेगा हे हाउ आर यू, हम बोलते हैं यस आई एम फाइन. 80 to 90% वी आर मास्किंग. बट धीरे धीरे हुआ क्या उसका असर, वी स्टार्टेड मास्किंग आवर ओन इमोशंस टू आवरसेल्फ. अपने आप से भी झूठ बोलना शुरू कर दिया. नहीं नहीं, ये होना गलत बात, बुरी बात, मेरे माइंड में ये थॉट आना ही नहीं चाहिए. गुस्सा करना बुरी बात, नो 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 नो, ये थॉट नहीं आना चाहिए. नहीं नहीं, मुझे ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड. Acknowledge your emotions.
इंटेंसिफाई योर इमोशंस, अपने आप को समझना सीखो और अपने आप को वैलिडेट करना। हाँ मुझे ये फीलिंग आ रही है, हाँ मुझे सामने वाले पे इतना गुस्सा आ रहा है, ऑन अ स्केल कितना आ रहा है, उधर ही इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब सबसे पहले अपने आप से हमने एक्सेप्ट किया दैट यस आई एम फीलिंग लाइक दिस, बट हमें लगता है कि ये नेगेटिव थॉट्स को दूर भगा दो, कि दूर भागने से कुछ नहीं हो रहा है, वो अंदर ही जा रहे हैं। वी आर इंटरनलाइजिंग those rejections, those abandonments, those emotions, हम अंदर ही अंदर वो लिए जा रहे हैं। And if we don't know how to process, like how we said, we don't know how to speak it out, मुझे नहीं पता चलता ये मेरी सेफ स्पेस है, ये मैं बोल सकता हूँ, या सामने वाले को फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, या मेरे को क्या हुआ, वो अंदर फिजिकली फटेगा। Staying too long with that emotions, जैसे बोलते हैं 24 आवर्स तक मुझे कोई थॉट किसी के बारे में परेशान कर रही है, मैंने वो बोली नहीं, it will actually internalize and then it will physically lash out at a later stage. That is how we develop migraines, that is how we develop our gut issues, that is how we develop even cancer cells. So the biggest form of self-care is first try to understand your body. Your gut and your brain are two kinds of brains, जिसे हमें समझना है और एक्चुअली उसको प्रोसेस करके एक्नॉलेज करना है। बिकॉज हम पॉजिटिव रहने के चक्कर में अपने आप को ही नेगेटिव की पूरी दुकान बना देते हैं, एंड वी डोंट नो हाउ आर वी गोइंग अबाउट इट, एंड वी हैव स्टार्टेड टेकिंग ओके शायद गलती में अभी लाइक हाउ वी अंडरस्टैंड कि ठीक है सामने वाले को तो हम फिक्स नहीं कर सकते, हम अपने आप को फिक्स कर सकते हैं। ओके आई एम फीलिंग ओके, ये हो रहा होगा, बट स्टिल वी डोंट नो हाउ टू प्रोसेस। हुआ क्या मेरे साथ, मुझे बुरा क्या लगा, वो ट्रिगर क्या था, क्या मैंने अपना पैटर्न समझा, क्या मैंने उस पर वर्क करने की कोशिश की। दैट इज द फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। अच्छा, एक अपनी कहानी यस में आपकी रियल रियल स्टोरी, यस मतलब जो है कि दैट इज केस एक्सरसाइज ओके मीन्स मैं पिछले 1-1.5 महीने से आई एम शेयरिंग नाउ वन ऑफ माय रिलेटिव ऑन टेलीफोन. We were having different viewpoints, and that relative on telephone banged me, even abused me. ओके Right? Ab he is a close relative, and I was right. He banged me, right? So I got a sort of a ripples shock कि भाई यस ये कैसे हो गया या क्यों हो गया, राइट? तो वो जो है कि अब पिछले 15 दिन से आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ ए वो थॉट्स जो हैं आर इन द ब्रेन, करेक्ट एंड मैं फिर अपने अपने तरीके से या उसको ठीक है, उसकी प्रॉब्लम होगी, लेट मी फॉरगिव हिम, राइट, ठीक है। फिर कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करने के बाद में देन आई केम टू कंक्लूजन कि द बेस्ट थिंग इज, अभी की सिचुएशन में विच आई कंक्लूडेड विच में बी रॉन्ग, इज दैट कट ऑफ, थोड़े समय के लिए कट ऑफ रखें, उनको अपना हीलिंग करने दें, हम अपनी हीलिंग करें थोड़े समय के लिए। अभी हम हैव ए सॉर्ट ऑफ ए यू कैन से वो अपना जीवन जिए, हम अपना जीवन जिए। अब हो सकता है दिस में बी रॉन्ग अप्रोच, बट दिस इज व्हाट आई कंक्लूडेड। वेरी वेरी नाइसली पुट इट अप डॉक्टर उमेश। हम लोगों से बातें करते हैं और वो थॉट्स हमें ना इम्पैक्ट कर जाती है और वो रोज ट्रबल करती है। वेरी अब नाइसली। जैसे अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ हाँ तो मेरे को अच्छा लगेगा। हाँ जैसे जी जैसे अभी आपने बताया कि स्पीक इट आउट, ये इमोशन मेरे को 2 हफ्ते से परेशान कर रहा करेक्ट है, राइट? ओके, कि एक तो यू कैन से वेरी वेल रिश्तेदारी है, हम्म हम कुछ मतलब रिश्तेदारी है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, पर रिश्तेदार मेरे को जो है इस प्रकार से यदि बात कर रहा है ना, तो सॉर्ट ऑफ ए दुख तो हुआ, लेकिन अब वो दुख मैं सॉर्ट ऑफ किससे शेयर करूं, मैं किससे शेयर करूं? तो शायद ईश्वर ने पिंकी मेरे सामने भेज दिया जिससे कि मैं शेयर कर रहा हूँ। करेक्ट
अच्छा, वेरी नाइसली यू पुट इट अप, बिकॉज ये रोज पीपल आर गोइंग थ्रू दिस एंड ये थॉट बहुत परेशान कर जाती है. तो आई ऑलवेज टेल पीपल, अगर हम ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि कोई चीज मुझे अफेक्ट कर गई और हमें वो रोज परेशान कर रही है, यू नो, सो इज देयर अ लैक इन मी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और इज इट कि जो सामने वाले ने बोला वो शायद कितनी पीड़ा में होगा जो उसको मालूम नहीं है. मतलब वो उसका काइंड ऑफ ट्रिगर भी हो सकता है कि इसने मुझसे ऐसे कैसे बात कर ली, बिकॉज ऐसे सर्कमस्टेंसेस उनकी लाइफ में इतने हुए होंगे कि यू कुडंट टेक दिस एंड ही लैश्ड इट आउट. दैट इज हाउ ही सेड he banged the phone on you. Correct. I'll give you even small examples. एक 6 महीने का, 6 महीने, I'll say 2 months baby was brought in for counseling. So we can't obviously counsel the baby. 2 months है, वो छोटू सा बच्चा है, and the parents have come and was asked कि the baby had rashes on the genitals and was fully red. Again, it's a case study I'm giving. And बोला गया कि इसको क्या हो गया है, एंड सब उन्होंने एलोपैथी ट्राई किया, ट्रीट किया, हुआ नहीं. तो वी आस्क्ड द मदर कि हाउ वाज योर 9 months एंड प्रेगनेंसी. दैट इज वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम 0 to 7. 0 मतलब माँ के पेट के अंदर से. सो द मदर वाज लाइक, आई वाज फोर्स्ड टू हैव अबॉर्शन पिल्स टू अबॉर्ट द बेबी. सो इसकी अभी इफेक्ट क्या होती है कि बच्चा जब एक्चुअली पैदा हो रहा है, इन द वूम जब बन रहा है द बेबी, ही इज ऑलरेडी फीलिंग रिजेक्टेड. You know, he's forced, the mother was forced to have the abortion pills. So when we are born with the primary emotion of rejection, तो उसके बावजूद बच्चा पैदा हुआ, he has to fight his battle every day to prove himself कि हाँ, I am important, I am validated and I need to be heard and I need to be loved. तो उसके चक्कर में वो full of anger और rage से पैदा हुआ था, और उसकी रैशेस जेनाइटल पे जो थे वो रिजेक्शन की वजह से. सो हाउ मच दिस, हाउ यू सेड आई नीड टू फॉरगिव दैट पर्सन. पहले तो मैंने अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट किया, लाइक हाउ 15 दिन से मुझे ये थॉट बॉदर करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है. सो ये मेरे अंदर की कोई लैक है तो मैं फिक्स कर सकता हूं, बट अगर द लैक इज नॉट इन मी, as I self-introspected quite a lot, so I just give healing to that person and he feels good. And again, express this thought कि मुझे नहीं अच्छा लगा आपने ऐसे बात की. With a very calm state and a sweet tone. Why? Because सामने वाले को शायद पता भी नहीं चले what he behaved with you. That child जो हुआ, फ्यूचर में ऐसा होता है कि चाइल्ड भाग जाता है घर से इन 9th and 10th ग्रेड. उसके बाद ऐसा होता है कि चाइल्ड ही हैज टू, उसने हर बार गलत डिसीजंस लिए, वो लोन्स में गया, वो डेप्स में गया, एंड ही स्टार्टेड बिहेविंग रूड एंड काइंड ऑफ फीलिंग कि ये वर्ल्ड इज अनफेयर, आई एम नॉट लव्ड. बिकॉज वो लव उसको कहाँ से चाहिए था? सबसे पहले हमें पेरेंट्स की वैलिडेशन चाहिए, और वो वहीं से पैदा हुआ कि फीलिंग रिजेक्टेड, फीलिंग अबैंडन्ड. ओ, इट वाज नॉट अ गुड फीलिंग. So that is the reason self-care का सबसे बड़ा aspect, which as a psychologist I explain, is repair the relationship with yourself. We have to understand from where are we coming from. हमारा primary emotion क्या है? अगर मेरा प्राइमरी इमोशन लव होगा ना, तो मैं सब चीजें धीरे धीरे हैंडल कर लूंगी. मेरा प्राइमरी इमोशन हैप्पीनेस होगा ना, आई विल बी लाइक ओके, आई विल बी सोल्यूशन ओरिएंटेड. चलो इन्होंने ऐसा किया, अब हम कर सकते हैं इसको ठीक. बट मेरा प्राइमरी इमोशन, आई एम बोर्न आउट ऑफ फियर, आई एम बोर्न आउट ऑफ रिजेक्शन, आई एम बोर्न आउट ऑफ, आई हैव सो मेनी पेरेंट्स हु कम एंड टेल मी, यार ये बच्चा इतना नालायक है, पैदा ही नहीं होना चाहिए था, इसको पेट में ही मार देना चाहिए था. Oh my God, the child is suffering. वो आज 40 years हो चुके हैं, 50 years हो चुके हैं, and he is not feeling good from inside because root cause तो उसका solve ही नहीं हुआ. तो उसको लगता है जो मुझे कोई बोल के जाता है is an attack. देखो इसने मुझे सुना दिया.
I am not feeling worthy. I'm not feeling loved. Yes. एक और चीज मैं आई वांट टू थैंक यू दैट यू हैव गिवन ए इंसाइट कि मैं तो अपने आप को अच्छे से जानता हूँ कि मेरा प्राइमरी इमोशन लव और हैप्पीनेस है। मतलब जो है कि विच इज मैं कई बार एनालाइज किया हूँ एंड आई केम टू दिस कंक्लूजन कि दूसरों को खुश रखो, लव अदर्स, दूसरों को खुश रखो, स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड लव, ये बार बार यही आता है। तो उससे ऐसा लगता है कि माई हीलिंग देयरफॉर occurs fast because of that primary emotion. Yes, yes. We'll heal fast and you'll still want to give. We'll be the biggest, those people are the biggest givers. You know, उनको बहुत अच्छा लगता है खुशियां बांटना. And there are certain people who have that smile, that fake smile, but they're carrying pain. They're carrying those negative feelings, those hatred and jealousy feelings कि नहीं यार, ये कुछ है, ये कुछ है, ये. And they keep judging people. They keep judging people. It is so like this. Okay. We'll start with the self-care activities. इससे पहले हम लेट हो जाए, हम बहुत ज्यादा intense और deep में चले गए. I hope everybody understand and everybody is with me. Also we realizing हम कितने lonely है. We think कि हमें सिर्फ घर वालों और रिश्तेदारों के साथ अपना social quotient निभाना है. No, please step it out. If you are even having that, by this age we are having that knowledge and wisdom, impart it to the world. Go mingle around with different groups, impart it to the world. अपनी दिल की बात शेयर करके तो देखो, it is such a beautiful feeling और वो सुकून वाली feeling आती है. मेरे बहुत सारे clients, especially male clients who used to go to the neurosurgeons and everything, and you know neuro की बीमारी, nerves, immune की, so we are taking हम antidepressant pills ले रहे हैं. They have come and shared even their deep down dark secrets और वो दवाइयां बंद हो गई हैं. इट्स बिकॉज हमने अपनी दिल की बात किसी से की ही नहीं. अंदर वो रखा सीक्रेट की नहीं है, किसी को बताना नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर लाइंग इन सम गिल्ट, वी आर लाइंग इन सम शेम. ओ मेरे साथ ऐसा हुआ था. एंड वो कितने कितने टाइम की पहले की दिल की बात है जो हमने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की. एंड वो इतनी बड़ी घर कर जाती है, सप्रेस्ड इमोशन बन जाता है, एंड वी गेट ऑन पिल्स. लाइक आई माई सेल्फ, 12 years of anxiety and panic attacks, I used to throw up. मुझे नहीं पता था ये इमोशनल प्रॉब्लम होती है. आई एम रनिंग अराउंड टू मुंबई's #1 डॉक्टर्स ट्राइंग टू हील एंड क्योर माई सेल्फ, बट कोई इलाज नहीं मिला. Worst and worst and worst and worst until I came into this field and I understood myself. And then I was like, okay, सिर्फ अपने आप को एक्चुअली समझाने से एंड एक्सेप्ट करने से हम इतना लेयर कैरी कर रहे हैं कि हम अपने आप से ही झूठ बोले जा रहे. समझ ही नहीं आ रहा था. एक्सेप्ट कर लिया, पता चला रूट कॉज आज कहाँ से रहा है, मेरा प्राइमरी इमोशन क्या है, मैं किसको कॉपी कर रही थी, मैं किससे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर वो कर रही थी. वंस आई अंडरस्टूड दैट, थिंग्स वेव्ड. ऐसा नहीं कि ट्रिगर्स नहीं आएंगे, अभी भी आएंगे. आई नीड टू अंडरस्टैंड अब ऐसा क्या हुआ कि इस इंसान ने मुझे कह दिया या मुझे बुरा लगा. इट्स अ लैक इन मी, और इज इट सामने वाला इज गोइंग थ्रू समथिंग. Yes, please. Sakshi, we can start. Yes. Yes, yes. Next slide. Okay, next slide. So mindfulness and self-awareness. जैसे कि डॉक्टर उमेश जी ने भी बताया, how mindful are we even to talk to people or even convey our message? हमें लगता है यार इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी या फोन नहीं करना चाहिए था, बट क्या मैंने ये एक्सप्रेस भी किया कि how are you talking to me? और ऐसे फोन रख देना is like kind of an insult to me. Do you even consider? So spend a few minutes every day. आपके जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, उसको हम जर्नल करें, अपने एपिसोड को लिखें. वी नेम आवर इमोशन एंड वी अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं. दिस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड इन मी. लैक मेरे में है कि आई डिड माई बेस्ट, सामने वाला क्या कर रहा है.
Yes, next slide. Set boundaries, like how he said. Okay, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ उस इंसान को कि वो सोचे, वो हील होए और वापस आ जाए. हम बाउंड्रीज दे दें. हम ओवर किसी के लिए करें, ओवर हेल्प करें या ओवर उसको समझाने की कोशिश करें एंड सामने वाला इज नॉट रेडी टू टेक इट. हैव सम बाउंड्रीज. हैव सम बाउंड्रीज, बिकॉज ये आपकी मेंटल वेलबींग के लिए बेटर रहेगा. Because if I'm suffering from a thought for 15 days continuously, it is going to bother me. Boundaries रखेंगे, थोड़ा distance देंगे and heal भी कर सकते. Amazing. Yes, next slide. Self-care routine. Okay. Very nicely how उमेश जी ने बताया. Again, physical workout इतनी mandatory है ना कि वो जो body में emotions stuck up होते हैं वो release होते हैं. इसलिए हम बोलते हैं गोइंग फॉर योर वॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डूइंग योर योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैविंग दोज रिलैक्सेशन डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी बॉडी का मूव होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वो जो इमोशंस है हमारी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं. आई हैव अ होल दिस प्रोग्राम वेर इन हर एक बॉडी पार्ट किससे रिलेटेड है विद विच इमोशन जो हम इतने टाइम से कैरी कर रहे हैं. Okay. Next. Daily gratitude. Okay. Now, gratitude as a research also been proven कि हमारा सबसे पहले half an hour of the day time we wake up, also the time we sleep, half an hour prior before sleep. If we practice gratitude, मतलब उसमें हम शुक्राना करें, उसमें हम फाइंड आउट करें हमारे दिन में से आज क्या चीजें थी जिसको मुझे बहुत अच्छा लगा. वी डू दिस ग्रेटिट्यूड जर्नल. मैंने एक क्लाइंट को ये बोला था तो वो बोलती है मैं रोज लिखती हूँ ग्रेटिट्यूड. वी ऑल्सो सेड कि तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस सोफे पे बैठे हो, जिस बेड पे बैठे हो, उसको भी ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि वो हमारा वेट सेंड करे, हमारे जूते, हमारे चप्पल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग. देयर वाज अ टाइम शी सेइंग अभी मुझे इतना टाइम हो गया ग्रेटिट्यूड लिखते लिखते, मेरा सब खत्म हो गया, मुझे कुछ नहीं है ग्रेटिट्यूड देने के लिए. ही वाज लाइक आर यू सीरियस? हम रोज जी रहे हैं, हम रोज कर रहे हैं, जो लिटरली मीटिंग पीपल एवरी डे, बट आर वी इवन अंडरस्टैंडिंग द क्यूज जो हमें मिल रहे हैं, इवन द नेचर एंड द abundance which is there. Start giving gratitude. And this research has proved an 80% of an amazing impact on human brain, which lets you live healthily and solution oriented. क्योंकि हमें solution oriented बनना है. Now we want to be bogged down with our feelings. So gratitude is an amazing way to start your day with and to end your day with. Yes, Sakshi, next. Positive affirmations. Okay, yes, affirmations को हम अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं. जो मेरी इस वक्त मे बी इट्स माय रिलेशनशिप टाइम, सो हील एंड ग्रो योर रिलेशनशिप. अगर मेरे रिलेशनशिप में कहीं कहीं लैक आ रहा है, लाइक इवन नॉट ओनली विद माय पार्टनर, विद माय चाइल्ड, with my relative, with anybody, we can start giving affirmations on those basis. We can actually curate affirmations. मुझे कहीं Google से भी निकालने की जरूरत नहीं. This is a relationship I need to heal on. It's going very well and it's very positive and I'm getting good vibes from that person. हम अपनी affirmations खुद curate कर सकते हैं in whichever aspect you want, even in money aspect, relationship aspect, career aspect, love aspect, anything. Again, gratitude journal and affirmations. If we do in the first hour and the last hour, amazing results for our brains, amazing results. Yes, Sakshi, next slide, please. Create a safe space. Designate an area in your home where you can relax and focus on your needs, free from distraction. हम बोलते हैं हम मे बी लिखने बैठते हैं, बट हमें थॉट्स एक्चुअली हैम्पर करती रहती है. ओ गॉड. एंड मुझे लगता है आई हैव सो मेनी बच्चे क्लाइंट्स, टीनेजर्स आल्सो सेइंग कि आई डोंट लाइक इट. वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, मुझे वो अच्छा ही लगता है. स्टार्ट क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस जहां आपने एक सिर्फ प्लांट रखा है या कुछ रखा है, एंड यू सिट देयर एवरी डे
and you say this to yourself, this is my safe space, I can be myself and I can actually do this. जब ये रोज हम करना शुरू कर दें, आपने अपने माइंड को एक्चुअली इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया कि नहीं ये आपकी सेफ स्पेस है, और आप इधर रिलैक्स्ड और फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस फील करेंगे. It will take a little practice, consistency. You see, there'll be great results within few days and you will feel really relaxed. फिर वो घर में कहीं पे भी हो, आप अपनी सेफ स्पेस में जाओगे, यार here I feel relaxed. And this does wonders, ना, ये मैंने भी किया हुआ है. It's very good. Yes, next slide. Mini check-ins like, okay, like इन्होंने बहुत beautifully डॉक्टर उमेश जी ने बोला कि हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि 15 दिन से वो थॉट एक्चुअली हैम्पर कर रही थी. तो मिनी चेक-इन्स हमारे साथ भी करने पड़ते हैं कि am I attuned to my emotional state, कि ये मुझे कुछ actually bog down करना है, तो I need to distance myself from that worry and give that person also a safe space कि वो heal होए, वापस आए, मैं भी थोड़ा टाइम लूं, थॉट्स को अपनी प्रोसेस करूं एंड करूं. ये मिनी चेक-इन्स अपने साथ really helps again even to repair the relationship with myself. Self introspection, self awareness and self realization. It really helps. Yes. Okay. हमने एक I think journaling आया था. Journaling your thoughts, right? The first thing was there. Journaling your thoughts. Yes. So, oh, forgive yourself. This is the biggest thing. क्योंकि हमें रोज लगता है कि okay, again हम I also coming into this field, हम जितने मर्जी कर ले चीजें, कहीं ना कहीं हम किसी की स्टोरी में गलत होंगे, कहीं ना कहीं मैं किसी को हर्ट कर बैठूंगी. वी कैन नॉट बिकम गॉड, वी कैन नॉट बिकम एब्सोल्यूट के मैं किसी को हर्ट ही ना करूं जबकि मेरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सुपर है. नहीं हो सकता है वी विल हर्ट. सो forgive yourself the most importantly. हम दूसरों को तो forgive कर देते हैं जल्दी से, but खुद को forgive नहीं कर पाते. मैं ही गलत होंगी, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ, घर में situations ऐसी आई हैं, मेरी वजह से आई हैं. And we literally hamper ourselves to the teeth. So ये harsh judgment हम अपने ऊपर रखते हैं, अपना एक benchmark set करते हैं, और हम ये चीजें अपने आप से रिलीज नहीं कर पाते, एंड वो अंदर ही अंदर हमें अगेन फिजिकली फटेंगे, इमोशन स्टक अप हो जाएंगे, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग. इट रियली डज नॉट हेल्प अस. सो फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट, embrace the experiences and we can go ahead. Again, engage in meaningful activities. मीनिंगफुल क्या है कि हमने अगर रिश्तेदारों में हम 4 लोग बैठे हैं, वेरी ऑफन विद द मनी रिलेटेड इशू, ऐसे सामने 2 लोग बोल रहे हैं, परिवार में किसी के परिवार में झगड़ा हो रहा है पैसे को लेके, देखो पैसा चीज ही ऐसी है, सॉरी दैट वाज आल्सो नॉट गुड बिकॉज हमने भी उसमें एंगेज कर लिया. हम चाहते हैं हमारा रिलेशनशिप विद मनी ठीक हो, बट अगर हम ऐसी बातें किसी और के लिए, थर्ड पार्टी के लिए भी करेंगे ना, वो रिलेशनशिप हमारा मनी के साथ ठीक नहीं होगा. हम दूसरों की घर की बातें कर रहे हैं कि यार वो लड़की भाग गई या उनका डिवोर्स चल रहा है, ऐसा हो रहा है. बट इफ आई एम एक्चुअली इंडल्जिंग इनटू दैट act, the thought, even the talks, or 2 people are talking but I am sitting there, I'm actually not aligning with my values and passions, and I want my relationships to heal. It will not heal. We say कि ना चलो ठीक है आप गॉसिप कर रहे हो तो फिर भाई you're the next gossip. But even in these normal things we have to be very mindful. जो आपके values के साथ assign नहीं हो रहा है, align नहीं हो रहा है, get up from that table. It is not helping you to uplift yourself. It is actually deteriorating yourself. And then we say कि हम manifestations करते हैं वो पूरे क्यों नहीं होते हैं? Because we are indulging into certain wrong activities. So indulge into those things जो मेरे भी sense of purpose को actually fulfill करे. Yes, next slide please. Practice compassion.
treat yourself with kindness, especially during challenging times. Biggest hack over here also, मैंने इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी पीछे डाला था कि write to yourself self compassionate letters to your current self. एक टाइम था when I was also physically so bogged down, क्योंकि whatever we are nourishing to our five senses हमें वो हो जाता है, तो हम जितना मर्जी ट्राई करें हम वो नेगेटिविटी से कभी कभार सराउंड हो जाते हैं और खुद बॉग डाउन हो जाते हैं. एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड कि मैं करियर में इतना कर रही हूँ, बट मैं क्या करूँ, हम अपने ऊपर इतना हार्ड हो रहे होते और हम समझ नहीं पा रहे होते क्या कर रहे हैं. सो आई सी सो मेनी पीपल सफरिंग विद दैट. फर्स्ट स्टार्ट बीइंग कंपैशनेट टुवर्ड्स योरसेल्फ. राइट self compassionate letters towards myself. Like even in the, I'll give you the example of जो डॉक्टर अमेश जी ने बोला कि मेरे रिश्तेदार के साथ बातें चल रही है और उसने ऐसा किया and I'm not liking it. Write a self compassionate letter to yourself कि या हाय उमेश, इट्स ओके, आपने अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया, अपनी तरफ से ये सब चीजें की, एंड इट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली ओके टू फील लाइक दिस. एंड सी दिस डज वंडर्स. There was a, I'll tell you, 1 year back, flat 10 days time, every day I was writing self-compassionate letter to myself because some thought was actually bothering me a lot. Literally try this hack. It works wonders. कभी भी आप अपने thoughts में इतने ज़्यादा bogged down आ जाओ, start writing self-compassionate letters. And then you will come to know you have little victories and you can have that win. Yes, Sakshi, next slide. Yes, we are done. That's amazing. Thank you, everyone. You can ask questions. You can even start asking anything. आप लोग को कुछ और समझना है, even in regards to digital detox or anything, you know, or loneliness, or even to work on ourselves. Yes, Dr. पिंकी जी एंड साक्षी मैडम, सबसे पहले तो इमीडिएट फीलिंग ये है कि ये दिल मांगे मोर. Wow. सो मतलब जो है कि वी वांट अनदर सेशन. Oh, sure. क्योंकि क्या है कि मैं आई एम सॉर्ट ऑफ ए very clear that this is a very important thing. And आपके स्टोर हाउस में अभी बहुत कुछ है. Right, so this is the first reaction. और मैं आपसे एक चीज और शेयर करूंगा, if you can tell मतलब जो है what happened in my life was actually another case story. Please. Is I was scammed. Okay. And some person sort of robbed me of say around 6 lakh rupees online. Right? तो दिमाग खराब मेरा भी हो गया और पूरे परिवार का दिमाग खराब हो गया कि 6 lakhs कोई छोटा मोटा, यू आर ए फूल. मतलब आई वाज डिक्लेयर्ड दैट यू आर ए फूल. So I accepted that yes, I am a fool. Yes. Yes. So then I started initially there were mental blocks, pareshani. Then I started forgiving myself. कि यार ठीक है, मैंने कुछ दुनिया में अच्छे काम भी किए हैं भाई, पैसा कमाया भी है, अच्छे काम भी किए हैं, ये मैंने गलती की है तो ठीक है. मतलब जो है कि आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस. एंड देखिए कैसा यूनिवर्स हर्ड माय फॉरगिवनेस. Okay. I forgive myself. I ask then universe कि प्लीज फॉरगिव मी. और कुछ पिछले 1-2 महीने में उससे 5 गुना ज्यादा पैसा मेरे पास आ गया. I was just about to, waiting for that. Amazing. See. ये सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी. Yes. Forgiving ourselves, being compassionate to ourselves is so important because this bargain me fear again. You said how I got scammed, and fear. Yeah, I got scammed. I was sort of I was helpless. And किसी के पास में इतना पैसा नहीं होता है, तो जब ऑनलाइन करना था तो आई हैड टू टेक मनी फ्रॉम माय वाइफ्स अकाउंट ऑल्सो.
तो घर में तो युद्ध होगा ही ना कि भाई तुम कैसा आदमी है भाई कि इतना पैसा गवा दिया तुमने, है ना। तो फिर समझाया कि भाई ठीक है, गवाया गवाया गवाया, माय इंटेंशन वाज राइट, माय Correct. इंटेंशन वाज राइट, ठीक है ना। मेरा इंटेंशन बहुत ही प्योर और अच्छा था, ठीक है Hmm. ना। है, पर यही व्यक्ति जो है ने बहुत कुछ कमा के भी दिया। Fear of making a mistake. How you said ये मेरी mistake थी. Fear of failing. And then what happens? I give judgments to myself. Also, the other people have the rights to give the judgment on me. Right? कि ये he's a fool. But nobody remembers the story कि इस इंसान ने इतना किया भी है और कमाया भी है और ऐसा है. गलती करेंगे नहीं तो समझ आएगा नहीं, वैल्यू समझ। सो फर्स्ट हम बच्चों को फॉरगिव कर सकते हैं, वाइफ को फॉरगिव कर सकते हैं, बट जब अपनी बात आती है ना, हम कर नहीं पाते अपने आप को, एंड वी एक्चुअली सफर इन दैट स्ट्रगल. सो मोमेंट यू स्टार्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ, यू सी योर इंटेंशन इज प्योर ना, वो मल्टीप्लाई हो गया है, एंड एक्चुअली एमएमआई जब हुआ था, साक्षी वाज आल्सो देयर इन दैट एमएमआई. एमएमआई में थेडियस gave one exercise. He asked to write it down. मैंने ये एक्सरसाइज को लिखा था, इस एक्सरसाइज को लिखा था. देन ही टोल्ड, थेडियस आल्सो टोल्ड कि फॉरगिव करो, है ना, या जो भी करो. और घर में आके फिर मैंने उस कागज को फाड़ दिया. यस, फिनिश्ड. ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, थैंक यू. And it is a less, I mean, I'll tell you, जो at least बाद में recording सुने या जो अभी यहाँ सुन रहे हैं, it is a beautiful self-disclosure जो आपने किया, and it is a beautiful way of even understanding कि अगर तुम्हारे से कुछ जाता है ना, and अगर आपकी intentions clear है ना, confirm multiply होके वापस आता है. And it is very true. It is very, very true. I also want और to एक add. चीज और भी. यस प्लीज प्लीज. So when one second, I'm just when Dr. Umesh mentioned that, this is what I thought, that let that relative be aside, and I'm doing, and he questioned himself, I don't know whether I'm right or wrong, and in this journey of ours, there is nothing right, nothing wrong. No person can come and say that you're right in this journey, because you have analyzed yourself, and you know what's better in this situation, rather than a third person coming in and giving a guidance. Yes, they may help you give the clarity, find the clarity within yourself, but there is no right, no wrong. Find your own space, find your own ways, and there is no hard and fast rule ki you have to forgive today, you have to forgive tomorrow. It is a process and it takes its own time. The only thing that we can do is take that first step towards it and keep moving. So it will take its time. No right and wrong, because हमारा right किसी और की इसमें wrong हो सकता है. किसी के ट्रिगर्स कुछ और हो सकते हैं, हमारे ट्रिगर्स कुछ और हो सकते हैं. There's always a gray area. That's why I said प्राइमरी इमोशन बनने का क्या है ना, नहीं मालूम. वो रूट कॉज पता चलता है, ओ माय गॉड, फिर पता चलता है वो इतनी सफरिंग हो रही है, इतनी सफरिंग हो रही है, और उस इंसान को खुद नहीं पता व्हाट इज ही डूइंग. और एक चीज और, बार बार सोच सोच के, मेडिटेट करके, एक चीज और भी, एक गुड न्यूज भी पता चली अपने बारे में कि इफ आई एम ऑनेस्ट इन माय प्रेयर्स, आई कैन कनेक्ट विद यूनिवर्स. यूनिवर्स सबसे कनेक्ट नहीं होते, ये भी फैक्ट है. यूनिवर्स को कनेक्ट करने के लिए भी एक पावर ऑफ प्रेयर चाहिए, या जो कुछ भी. तो आई थिंक के ये 2-3 एग्जाम्पल से ऐसे पता चला कि यूनिवर्स हर्ड मी. ऑनेस्ट, लाइक उमेश जी यू सेड, बचपन में स्कूल में सबको सिखाया जाता है हॉनेस्ट होना है, बट धीरे धीरे वो हॉनेस्टी का लेयर इतना करप्टेड हो जाता है, बिकॉज वो समाज में रहना है. सो यू हैव टू शो, सेट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. मम्मी पापा ने भी वो करप्ट कर दिया. जब तक आप 40s या 50s टच करते हो, वापस यू गो बैक टू स्क्वायर रूट. बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ऑथेंटिक इज सो इम्पोर्टेंट.
And again, Pinky, today's generation, we want to say, अगर ये सच्चाई के इस पे चलोगे ना तो पीछे ही रह जाओगे. अगर दुनिया की रेस में चलना है तो थोड़ा स्मार्ट बनना है, थोड़ा ये करना है. It's very tricky situation, even if you want to build those roots and values in your child, sometimes the parent only gets so confused because situations come up in life in such a way that you yourself have to tell the child, take a stand for yourself. For that matter, even if you have to, हाँ, अपने रूट्स अपने अंदर स्ट्रांग है वो जरूरी है, पर दिखाने के लिए कभी कभी Yeah, yeah. कैसे मोल्ड करने पड़ते हैं अपने आप को सिचुएशंस के हिसाब से. एंड That's देन a यू Hey, I mean, I was just working yesterday and किसी ने बोला कि मेरे फादर इन लॉ बहुत रोकते थे, तो मैं और मेरा बच्चा फादर इन लॉ को झूठ बोल के जाते थे. ऐसे मैं रोज बीइंग स्कूल काउंसलर पेरेंट्स को बोलती हूँ, एंड बच्चे बोलते लाइक ये डेथ्स में चला गया, ये ऐसा है, ये कावड़ है, ये इतना झूठ बोलता है. मैं ऐसी झूठ नहीं बोलती थी. ऐसे बड़ों के हिसाब से आपको लगता है, आपके एक्सपीरियंस एंड मेच्योरिटी के हिसाब से आपने जो झूठ बोला वो सही था, बट द चाइल्ड लर्न्स कि मुझे झूठ बोलना है. अब वो झूठ के बीच में सच सही क्या है गलत क्या है उसको नहीं फाइंड आउट कर, तो ही विल डू मल्टीपल लाइज इवन टू सेव हिमसेल्फ एंड जस्ट टू प्ले अराउंड, बिकॉज ये फीड इन हो गया कि झूठ बोलना इज ओके. और वो इज ओके के चक्कर में वो हर जगह ट्राई करेगा झूठ बोलना, यहाँ पे फिट इन वहां फिट इन, अपनी स्टोरीज बना लेना, अपने इल्यूजन्स में रहना. And what we did the damage to the child. And I have always said, if you're true, you're authentic, तुम्हें 100 झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे, पर एक झूठ बोला ना उसको कवर अप के लिए 100 झूठ लग जाते हैं. सो आप पेरेंट्स कैसे डैमेज कर देते हो ना आपको पता नहीं चलता. तो ये एक ऑथेंटिसिटी आना, एंड स्पेशली बच्चे के अंदर से भी आना, ओ गॉड, इट इज अ वेरी बिग वैल्यू टू बी इनकलकेटेड. नहीं, और झूठ बोलना, यदि झूठ बोलना बिकम्स अ हैबिट, इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर हिमसेल्फ. वो खुद के लिए टॉक्सिक हो जाता है. मतलब जो है वो उस वक्त रियलाइज नहीं होगा, बट बाद में जो बंदा सफर करता है ना, oh my god, I've seen so many patients, so many. And also, I would like to add on, I have written a book on self-care boost. Pinky knows about it. So being this topic, it was like, I'll just bring it up. And it's just available on Amazon, Flipkart. And yeah, I'll just share the link. If anybody is interested, can read that book as well. That was amazing. Please. Yeah. Because it's so important for us. I hope everybody can relate. And if anybody wants to share even their story or anything like Dr. Umesh ji has shared, so many things, we'll be so happy to hear it out. Anybody would like to share, please can raise your hand, or anybody can unmute themselves. You all can talk. Yes, Asha. एक्चुअली वन थिंग, जैसे आपने बोला कि सब कुछ पार्टिसिपेंट, मतलब समझो 20% इधर दिया, 20% इधर दिया, 20% मतलब ऑल ओवर. चलो फिर समझो अभी उमेश जी ने बोला कि एक फेथ आता है सामने कि हम लोग का ये काम हो गया, हम लोग का ये काम हो गया, वी मतलब वी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग है ना, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो सामने व्हेन वी गो फॉर द मंदिर और समथिंग, तो उसके बाद हाथ जोड़ते-जोड़ते ही हम लोग के आँख से आँसू निकलता है. व्हाट इज़ दैट काइंड ऑफ, इट इज़ एक रहता है जो हम लोग किसी को बोल नहीं पाते हैं, तो हम लोग के आँख से आँसू निकलता है. उसके बाद फिर ऐसी कुछ बात रहती है, वी आर टू मच थैंकफुल और वी मच मतलब बहुत हैप्पी रहते हैं. तो ऐसे होता है कि आप बोल रहे हैं ना, जो भी रहेगा कि यू राइट डाउन, यू नो तो समझो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ, या मैं किसी को बोल नहीं पाती हूँ, या मुझे वो टाइम नहीं मिलता है, वो सिचुएशन नहीं मिलता है वो शेयर करने के लिए. तो व्हाट इज़ दैट थिंग, ऐसा होता है कि वो सिचुएशन में ना मेरे आँख से समझो ऐसे जस्ट आँसू निकलता है. तो व्हाट इज़ दैट. I'll tell you, या as women, what we have seen our parents doing, especially mothers. अब मैं क्यों ये बोल रही हूँ, because 0 to 7 मतलब क्या full life जो हमने देखा है ना, हम वो repeat करते हैं. तो मैंने देखा है अपनी मम्मी को sacrifice करते हुए, adjust करते हुए, सब कुछ करते हुए, especially women.
Yeah. and never voicing out their emotions. तो I never gave weightage to myself कि मेरी बात की इतनी प्रायोरिटी मुझे देनी है. मुझे as a woman we've been brought up marriage is the ultimate goal. Next ultimate goal is बच्चे पैदा करना. उसका next ultimate goal is अच्छी माँ बनना. तो उसके चक्कर में क्या हुआ? I kept sacrificing myself. पहले घर वालों के लिए कि अच्छी बहन, अच्छी बेटी बनने के लिए, then अच्छी wife. We struggle. Then अच्छी माँ. We struggle. And now when I've come to myself, you are so empty, so void from inside. You don't know what you did. And we've been embedded with that value. A woman standing up for herself and talking, कोई वेटेज ही नहीं दे रहा है. You don't feel heard. You don't feel valued. You even come up to the self doubt कि मैं यहाँ किसी को कुछ बोल रही हूँ, फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है. Right. लगता है फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैं जी ही क्यों रही हूँ? I should commit suicide. I have umpteen these cases at a point of time, even I was going through this. But believe it or not, nobody is going to applaud you. Nobody is going to acknowledge you. You have to stand up for yourself and you have to voice out your emotions. That's the only way out. Because तुम बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? Even for manifestations, तुम मांगोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? Ask help. This is where our SQ needs to be built. कि हम सिर्फ घर वालों के या रिश्तेदारों के इसमें कंस्ट्रेंट में ही ना रह जाए. हम बाहर मैम we should ask help, so we will come to. Yes, आशा जी. या मैम समझो, एक्चुअली अभी समझो बहुत दिन हो गया, एक लिमिट क्रॉस हो गया और मैंने बोल दिया, तो मुझे क्या लगेगा, बाद में मेरे माइंड में ये चलेगा कि अरे यार मैंने सामने वाले को हर्ट किया, किधर ना किधर तो हर्ट किया, बट है ना वो मेरे माइंड से मतलब वो आ गया ना बाहर, तो आई फील रिलैक्स, एक ऐसा हो जाता है. बिकॉज एक इवन सिचुएशन अपनी बात को कहना हम इसको भी गिल्ट के साथ अटैच कर देते हैं, बिकॉज यू नॉट सीइंग. तो गिल्ट इज सर्व्ड इन अ प्लेटर, ऐसे प्लेटर में रखा है और हमने खाया है वो. इट्स बीन एक्चुअली इनग्रेन्ड. तो अपनी बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम 100% श्योर आई एम राइट, सो इसके लिए मैंने सामने वाले को बोल दिया ना, तो सामने वाले को वो वैल्यू समझा एंड शी केम, देन शी शोड हाँ यू आर राइट समवेयर. अच्छा चाहे है 10 आशा. कहनी पड़े. आशा, मैं एक चीज और आपसे जस्ट अपना और बताना चाहता हूँ. आपने कहे थे आप मंदिर गए थे और आपको थोड़ा रोना आ गया. आपको मैं एक टिप और अपने एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ. यदि आपको कभी रोना आ रहा है, कहीं रूम में जाइए और रोइए. यस. रोना जो है इज ए कथारसिस. ये आपके इमोशंस को बाहर निकालेगा. कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार रोना बुरा होता है. ऐसा नहीं होता है. यू गो, यू वीप. अपने इसमें एक एक्चुअली केस स्टोरी है सच्ची वाली. एक डॉक्टर था, वो 4 घंटे अपने वॉशरूम में जाके रोया था और उसके बाद में वो वर्ल्ड का सबसे अच्छा न्यूरो सर्जन बना था. उसने सारे के सारे अपने इमोशंस को बाहर निकाल दिया था. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग. थैंक यू सो मच. और मैम ने जैसे बोला, आशा जी, I'll add one more thing. रोने को हम एक कमजोरी का एक्ट दिखाते हैं, कि वो बंदा कमजोर पड़ गया या वो औरत कमजोर पड़ गई. इट्स एन एक्ट ऑफ करेज. एक्चुअली हाँ, वो एक एक्सपीरियंस जो आप बोल रहे हो ना, उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं एक्चुअली हम लोग. और एक मैम और एक बात बतानी थी. आपने मुझे बोला ना कि समझो बाहर वालों से बात करना, और समझो बाहर सोशल या फ्रेंड्स या और किधर कनेक्टेड रहेंगे तो हम लोग को और सब नॉलेज बटोर के वी है ना, जो प्रेजेंट रहता है ना, वी फॉरगेट एवरीथिंग. करेक्ट. तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है. बहुत. दैट्स व्हाई आई सेड ये सपोर्ट ग्रुप बना दो या ऐसी नॉन जजमेंटल स्पेस जिसमें आपको जज नहीं फील हुआ, बट यू आर हर्ड, you were understood, so you and we got appreciated more. True. Yeah. True. Yeah. आप एक्चुअली की लाइफ में यार ये बंदी इतना, you inspire people in so many ways you don't even know.
People actually praying to live a lifestyle like you and you feel you're suffering. So you don't know what you are actually given the value, but हमें वो value को use करना नहीं आता. यूज करना हम नहीं. उसको नेगेटिव कॉनिटेशंस दे देते हैं. हमें उसको ढंग से इंटरप्रेट करना नहीं आता. दैट इज वेरी साइकोलॉजिस्ट से कि अगर आपका पास्ट ऐसा था या एक्सपीरियंस ऐसा था, अब आप अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हो और उस पास्ट को क्या इंटरप्रिटेशन देना चाहोगे और आगे निकलना चाहोगे. को और सही ऐसी किया. बहुत Yes. ऐसी बहुत सी बातें हैं. जब भी मैं साक्षी से स्टार्टिंग में जुड़ी थी, तो जैसे उन्होंने एक एक जो स्टेप्स बताया था, उससे काफी एक्सपीरियंस हुए हैं. Yes. Thank you, Asha. थैंक She's यू, थैंक यू, थैंक Thank- यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. एक्चुअली उमेश जी ने भी मुझे बहुत कुछ अच्छी तरह से इतना नॉलेज दिया, और पिंकी जी ने दिया, भावना जी ने दिया. मतलब एक्चुअली बहुत थैंकफुल हूँ. No, every day in life we are getting, and actually सब planned है. ये आज के दिन आना था. It was some way and it was some kind of a learning जो हमें learn करना था. एक दूसरे से बातें करनी थी. बात And करने की. it was placed for us. ये platter नहीं, में बट आशा का तो नाम ही आशा है. तो so, ठीक yes, है, so anybody would like to share or say something, then we can end the session, है ना? yes. And we are open in the group also. If anybody wishes to share anything after a thought, you know, when we go after the session, we have some feedbacks going on in the mind, or some, you know, incidents that happened with us. By sharing, it just so happens that even you are becoming lighter and you're getting a validation that you're looking for, that what you're doing is right or wrong. Again, we are not going to the right wrong part, but just like how Asha said, that I had tears in my eyes and everybody said, please cry, you know, when you want to cry. So it gives you an encouragement to release your emotions. So this platform is open. Pinky ji will available on the group chat. She can guide you through your, you know, internal processes as well. If you wish to connect with her on private chat, you can connect with her on private chat. Again, it's a non-judgmental space, so please feel free to share your thoughts in the group as well. And thank you, participants, for being so interactive. And thank you, Pinky, for being here today for PosiFest 2024. Thank you, everyone. See you all tomorrow. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.